A very good morning, class 7th. So in the last lecture, we have finished with the test paper number 4 and I gave you homework. And I told you to send these two parts to me. But no student has sent any homework to me. Why? So should I stop teaching you? If you're not sending me the homework, then what is the use of teaching me? What is the use of teaching? मैं आपको इतने अच्छे से सारा समझा रही हूँ, वर्ड मीनिंग्स दे रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ. Each and everything I am giving you in writing, ready. Still you are people are not doing any homework and not sending anything to me. Why? I have completed all your syllabus and we are on the last unit now. We have to start with this unit number 6. So 80% of syllabus I have completed. Still you people don't listen to the teacher. I told you to do this work and you have not sent it to me. Should I leave this lesson? आप खुद कर लेंगे फिर ये छोड़ दूँ फिर मैं यूनिट. I will not going to teach you then. If you're not going to send me the homework, I will not teach you this lesson. Otherwise, today only send me the homework. पहले आप मुझे होमवर्क भेजिए. This one, I told you to do the writing skills and just for fun on page number 107. ये दोनों काम मुझे करके अभी भेजिए पर्सनल नंबर पे. अदरवाइज मैं आपका सिलेबस बीच में ही छोड़ दूंगी. Now open page 108, unit 6, wit and humor. So we are going to start with the unit number 6, that is wit and humor. So wit and humor means intelligence, wisdom, akalmandi. Humor means hasi mazak. So wit and humor, this unit contains all the stories, 3 stories, and that is one Kanta's snore, then the clever shepherd, the bishop's candlesticks. And there is one poem, daffodils, that is on a different theme. But these 3 stories are related to wit and wisdom, wit and humor. So let's start with the Kanta's snore. Story reading is a good hobby, and some people read stories to get knowledge. Some read just for entertainment, and the unit wit and humor contains 3 famous stories. These stories are very interesting and they have some moral messages also. So many of the people have a story reading as a hobby. Even I also like reading stories and novels also. So some people read stories just for the entertainment, just for the pleasure, and some read to get knowledge. Because when you read stories and when you read novels, so definitely your vocabulary increases and your language also improves. So it is a very good habit. So this unit contains 3 stories that are very interesting, and let's start with the first story, Kanta's snore. So what do you mean by snore? Do you know what is snoring? Something related to nose. आपके घर में कोई करता है स्नोर रात को सोते वक्त? Did you get any idea what I am saying about? I am telling about snoring, that is खराटे मारना. आपके घर में कोई मारता है खराटे? So here it's a story named Kanta's snore. So open page 109. A long time ago, there lived an old man who had a very big rice field, a strong horse, and a big fat pig. He also had a son whose name was Kanta. Now this boy had a snore such as you had never heard. No sooner did he lie down in the bed than he began to snore. So now this is a story about a father and a son, and the father was an old man who had a very big rice field. There is an old man who had a very big rice field. So there is an old man who had a very big rice field. उसकी बहुत बड़ी राइस की फील्ड है. एक बहुत strong horse है उसके पास, and a fine fat pig. Now he also had a son whose name was Kanta. उस old man का एक बेटा है जिसका नाम है Kanta. Now this boy had a snore such as you have never heard.
तो इस बॉय की जो स्नोरिंग थी वो इतनी ज़्यादा लाउड थी कि आपने कभी ऐसी सुनी नहीं होगी। नो सूनर डिड ही लाई डाउन इन द बेड एंड ही बिगेन टू स्नोर। और उसकी आवाज़ कैसे आती थी? घा घू, ऐसी साउंड आती थी उसकी स्नोरिंग की। तो आपने भी घर में सुना होगा, जैसे कभी कोई खराटे मारता है तो ऐसी अजीब सी आवाज़ें आती हैं ना, तो आपको हंसी भी आ जाती होगी कई बार, और कई बार डर भी लगता है। अगर आप सो गए हैं और आपने अचानक यू हर्ड दैट नॉइज, सो यू गेट अफ्रेड दैट व्हाट इज इट नाउ, व्हाट इज दिस नॉइज कमिंग फ्रॉम। So this boy Kanta also had a very unusual type of snore. उससे डर लगता था, इतनी उसकी loud snoring थी. So when he snored in Gha, the windows would rattle. वो इतनी जोर से स्नोर करता था कि जो विंडोज हैं, विंडोज के जो ग्लासेस होते थे वो रैटल करने मीन्स खड़खड़ाने शुरू हो जाते थे. एंड वेन ही स्नोड आउट द शटर्स फ्लैप. एंड शटर्स तो आपने सुना होगा, जो वुडन या मेटल के कवर्स होते हैं. तो जब वो ऐसे स्नोरिंग करता था तो कभी या तो विंडोज़ की जो पेन्स हैं वो रैटल करनी शुरू हो जाती थी, खड़खड़ानी शुरू हो जाती थी, और कभी कभी जो शटर्स होते हैं मेटल के या वुड के बने वो भी फड़फड़ाते थे, फ्लैप करते थे जैसे ऐसे ऐसे. So what's more, the wooden spoons and baskets on the kitchen shelf came clattering down to the floor. इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ थी कि विंडो पेन्स तो खड़खड़ाती थी और शटर्स भी फ्लैप होने शुरू हो जाते थे. उसके साथ साथ और क्या होता था कि जो उनके यूटेंसिल्स थे, वुडन स्पून्स हो गए या बास्केट्स में जो पड़े रहते थे ना, और बास्केट्स होती थी जो किचन के प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी आवाज़ से वो ऐसे 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 करके क्लैटर करके फ्लोर पे गिर जाती थी. क्योंकि जब कोई आवाज़ आ रही है धम 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 धम, तो वो ऐसे 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 करके दे यूज टू फॉल डाउन ऑन द फ्लोर. So the old man's house was a noisier at night than in the daytime. So when his boy used to sleep at night, so he used to feel very disturbed because इतनी ज़्यादा loud voice थी उसकी snoring की कि जब खिड़कियाँ दरवाजे ही धड़ 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 करने लग जाते थे और स्पून्स और जो उनके यूटेंसिल्स थे वो क्लैटर करके नीचे गिर जाते थे उसकी आवाज़ से, तो ओल्ड मैन को तो कहाँ नींद आएगी. और वो रात को उनका जो घर होता था वो ज़्यादा नॉइजियर होता था, मीन्स इतनी आवाज़ें आती थी उस घर से डरावनी सी कि वो सो ही नहीं पाते थे. दैट ओल्ड मैन कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली. So the worst part of it was that the older the boy grew, the louder he snored. Another problem was that जैसे जैसे that boy was growing old, his snore was getting louder, और ऊंचा ऊंचा snore करने लगा था. So as the time went by, the boy began to look ill. The old man began to look ill. So जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया कांता, तो उसकी स्नोरिंग भी बढ़ती गई और उसकी आवाज़ भी बढ़ती गई. और क्या हुआ कि जब आपको रात को नींद नहीं ठीक से आती तो आपकी जो हेल्थ है वो डाउन होने लग जाती है. क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए चाहिए उसके लिए आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है. और अगर आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा तो आपकी जो बॉडी है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी, मेंटली भी और फिजिकली भी. सो इस वजह से ओल्ड मैन couldn't sleep properly and he began to look ill. तो वो बीमार से लगने लग गया ओल्ड मैन, as he could not never get a good night's sleep, क्योंकि उसे रात में नींद ही नहीं आ पाती थी. इतनी ज़्यादा स्नोरिंग की आवाज़ होती थी कि वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता था. So one day the old man and the son were seated on the porch. So both the boy and the son, they were seated on a porch. Porch is a बच्चे घर के सामने एक कह लो कि आप जगह होती है खाली जहाँ पे आप कार वगैरह रखते हैं, उसको भी हम पोर्च कहते हैं. तो वहाँ वो एंट्रेंस, घर के आगे एंट्रेंस होती है, उसको हम पोर्च कहते हैं, थोड़ा खाली जगह. तो वहाँ पे दे वर सिटिंग बोथ फादर एंड सन, कांता एंड हिज फादर द ओल्ड मैन, एंड they were drinking tea. So the old man took a sip of tea and heaved a deep sigh. So the old man both were taking tea and he sipped the tea and he heaved a deep sigh, means लंबी सांस ली उसने एक. What's wrong, old man? Are you feeling sick? Kanta asked. So when he sighed very deeply,
So Kanta realized that something was wrong with the old man. He said, what happened to you? Are you not feeling well? क्या ठीक नहीं लग रहा आपको? No, not especially. It's just that I am not getting enough sleep lately, answered the old man. So he said, no, no, I'm well. Only thing is that I'm not getting enough sleep. Lately means recently, means मुझे नींद पूरी नहीं मिल पा रही है. That is why I'm feeling sick. I'm feeling tired. कांता was aware of the fact that he snored rather loudly. So कांता को ये मालूम था कि जो उसकी स्नोरिंग है वो बहुत लाउड है. जब वो खराटे मारता है तो दूसरा जो उसके साथ लेटा है या घर में जो है that person cannot sleep. So he thought for a while and he said, तो वो सोचने लगा कुछ करना पड़ेगा मुझे. He said, you can't sleep at night because of my snoring. I know that. I bet all right, from tonight I'll go somewhere else to sleep. So he thought for a moment, then he said, I know that you get disturbed because of my snoring. So from today from today you will get the best sleep, right? I'll bet. So where would you go? The old man asked. तो old man ने पूछा तुम कहाँ जाओगे? Just then they heard the horse whinnying in the stable. तो जैसे ही उसने the old man asked his son that where will you sleep? Just then he heard the whinnying of the horse. तो उनके पास एक horse था ना, मैंने बताया था strong horse. तो that idea just struck his mind. He said, okay, from today I will go in and sleep in the stable. मैं horses के साथ stable में सो जाया करूँगा. That's it. The stable, I'll sleep in the stable, for a horse won't mind my snoring. कि horse को मेरी snoring से कोई problem नहीं होगी, तो मैं आज से stable में ही सो जाऊँगा. So from that night on, Kanta slept in the stable, and the old man got the good night sleep, and which he missed for a long time. So from that night, he started sleeping in the stable with the horses, and old man was happy. So because he was not getting enough sleep, so now he was feeling good. Some days later, the old man went up into the mountain to cut wood, and he loaded the wood onto the cart for a horse to pull. But there was something that not quite right. The horse stretched his neck and thrust his legs as far as he could, but the cart wouldn't budge an inch. तो कुछ दिन के बाद क्या होता है? Old man went up into the mountain. माउंटेन पे जाता है old man horse को लेके wood cut करने के लिए. इनको लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत सारी लकड़ी काटता है और लोड कर लेता है कार्ट पे अपने. And for the horse to pull, and he just tightened the reins of the horse. उसने horse को ऐसे से पीछे से खींचा ताकि वो चले. But there was something that was not right. तो उसको ये फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ये horse चल क्यों नहीं रहा है. So when he noticed horse stretched his neck, तो उसने horse ने अपनी neck को stretch किया. जैसे आप stretch नहीं करते अपनी body को जब आप थके होते हो बहुत ज़्यादा. When you get up in the morning, you stretch your body. अंगड़ाई लेते हैं ना जैसे आप, वैसे ही horse ने भी ली. And thrust his legs as far as he could. और उसने अपनी जो legs हैं वो ऐसे आगे करके stretch की और neck को भी उसने stretch किया. But जो cart था वो बिल्कुल नहीं हिला, 1 इंच भी नहीं हिला. Now the old man thought that what to do. So come on now, you have always been proud of your strong back, said the old man. तो old man ने बोला क्या हुआ तुम्हें? Horse, come on, move on. तुम तो बड़े strong होते थे, क्या हुआ तुमको? The horse sighed. You know, I have been sleeping very poorly these days, and that is why I have lost my strength, I think. The horse sighed means horse told him. इसमें horse भी बोल रहा है. Horse told that old man that I couldn't sleep because of your son's snoring, and that is why I have lost my strength. तो मैं रात को सो नहीं पा रहा, तो इसलिए जो मेरी strength है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है. I'm feeling weak. Horse says these words. The old man could do nothing but unload the cart by half, and pushing it from behind, he managed to reach home with his wood. So the old man, he had no choice what to do. So somehow he unloaded the cart by half. तो उसने क्या किया, कार्ट को आधा अनलोड कर दिया. अनलोड करके आधी लकड़ी वहीं छोड़ दी और पीछे से
कार्ट को उसने खुद पुश करके somehow he managed to come home. किसी तरह उसने पुश किया कार्ट को पीछे से ताकि घोड़ा थोड़ा 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 हिले, क्योंकि जो हॉर्स था उसमें there was no strength left. Somehow he reached home. So when the Kanta saw this, he said, "What happened?" He shouted, "Old man, what's going on here? You went with the cart, horse cart, and why you are pushing it from behind? What? Why the horse is not pulling it? Has the horse taken ill? कि क्या जो horse है वो बीमार हो गया है?" The old man told him how the horse has lost his strength because he wasn't able to sleep at night. So the old man, he told everything that what the horse has told him, that he couldn't sleep. So that is why he is feeling weak. Kanta was silent for a while. So after listening that, Kanta was quiet. He said, "What to do now?" Then he said, "That's because of my snoring too." He knew that कि मेरी snoring है सबको disturb कर रही है. पहले father को करती थी, अब मैं stable में सो रहा हूँ तो अब horse को कर रही है. All right, I'll sleep somewhere else tonight. So he says, ठीक है, मैं कहीं और सो जाऊँगा आज रात से. Just at the moment, they heard the pig grunting. Then उसी टाइम जब उसने बोला कि मैं कहीं और सो जाऊँगा, तो इतने में उनके पास एक पिग था, फैट पिग. तो उसकी ग्रंटिंग की आवाज़ आई, जैसे पिग बोलता है उसकी साउंड. ही सेड, दैट्स इट, द पिग्स टी. मैं पिग्स के साथ, जहाँ पिग्स हैं वहीं पे सो जाऊँगा. पिग्स वोंट माइंड माई स्नोरिंग. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी स्नोरिंग से. सो फ्रॉम दैट नाइट ऑन कांता स्लेप्ट इन द पिग्स टी. He started sleeping there. A few days later, the old man went out to clean the pig hen. तो थोड़े दिनों बाद जो ओल्ड मैन था, he went there to clean the pig hen. पूरा एरिया उनका जो घर है, that area where the pigs stay. But what do you think he saw? वहाँ पे उसने क्या देखा? His pig, which has been so fine and fat, was no longer fine or fat. He was skinny as a scarecrow, as also he was shaking so much that he could hardly stand on his feet. So he saw that his fat pig, he has become very thin, very long, not at all. He has become so skinny, just like a scarecrow. जैसे स्केयर क्या होता है बच्चे, फील्ड्स में आपने देखा होगा फार्मर्स लगाते हैं ना स्केयर वो मटका एंड ऑल दैट, लकड़ी लगा के, और ताकि जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे ना आए, टू ड्राइव अवे द बर्ड्स. आपने फील्ड्स में देखा होगा फार्मर्स ऐसे करके लगाते हैं, ऊपर मटका बना होता है, उस पर फेस बना देते हैं वो, ताकि जो बर्ड्स हैं उनको ऐसा लगे दैट सम ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग देयर. सो दैट पिग वॉज जस्ट लाइक अ स्केयरक्रो. वो इतना ज़्यादा पतला, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था. ऑल्सो ही वॉज शेकिंग सो मच दैट ही कुड हार्डली स्टैंड ऑन हिज फीट. और जो पिग था वो इतना वीक हो गया था कि वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था. Now what in thunders happened? Weren't you the one who always proud of being fine and fat? Cried the old man. So the old man was surprised to see him. He said, "What happened to you? You used to be so fat and fit. What happened to you?" The pig breathed a deep sigh. तो pig ने भी बहुत लंबी सांस ली. How can I keep on getting fat when I don't get any sleep at night? The pig also complained the same thing, that when I'm not able to sleep at night properly, how can I get fit? आपको रात को अगर नींद नहीं ठीक से मिल रही तो आपकी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होती जाएगी, वो खराब होती जाएगी. इसलिए कहते हैं कि नींद भी बहुत ज़रूरी होती है. That night, old man said to Kanta, "I think I'll let the pig sleep in the kitchen. Has become so skinny. He always he says that he can't sleep." So that night, the old man told his son that pig is also having problem with your snoring and he couldn't sleep, and that is why he has turned so skinny. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया और वो इतना कमज़ोर हो गया कि वो अपनी टांगों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा है. Now that night, after listening that thing, Kanta was silent. He said, "Now what to do?" Eventually he said, "I know it's my snoring again. Well, then I'll sleep somewhere else." So Kanta, he thought for a moment, then he said, "Okay, I'll find some other place to sleep because I know that the problem is only my snoring." But you can't. Kanta didn't say a word. He began thinking. So he just started thinking that where he will sleep now. There's no place left.
The little frogs in the rice paddies could be heard croaking. तो इतनी देर में उसको जो उसकी राइस पैडी थी ना, बहुत बड़ी राइस की फील्ड थी. In the beginning I told you we had a very big rice field, a strong horse and a big fat pig. Now the rice field was left. वहाँ से उसको फ्रॉग्स की क्रोकिंग की आवाज़ आई. बहुत सारे फ्रॉग्स जो हैं क्रोक कर रहे थे. I know from tonight I'll sleep in the dike in the paddy fields. He said कि from today I'll sleep in the rice paddy fields, बोलते हैं उनको, rice fields. So that night Kanta took some straw matting and spread it on the ground on the top of the dike beside the rice paddies. So dike is a बच्चे dam. It's type of a dam. So he took that mat. Mat means जैसे आपके घर में चटाई होती है ना, वैसी उसने एक straw की एक mat उठाई और वो वहाँ जाके rice paddies में उसने वो मैट बिछाया and he slept there. Hundreds and thousands of tiny frogs croaked in his ear. तो जैसे ही वो सोया and he started snoring. and उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे, क्योंकि राइस की जो होती है ना फील्ड, उसमें पानी ही रहता है हमेशा, तो पानी की वजह से वहाँ फ्रॉग्स भी थे फील्ड में. तो इतने इतने छोटे 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 बड़े छोटे बड़े thousands and hundreds of frogs they came near her and they were croaking in his ear. तो उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ क्रोकिंग स्नोरिंग थी कि सारे जो फ्रॉग्स थे वो राइस पैडी फील्ड से निकल के आ गए उसके कांता के कानों के पास जोर जोर से क्रोकिंग कर रहे थे. The next morning the old man went to the paddies to see how Kanta was doing. So the old man went to the rice field. He went to see that how is he doing, कैसा है वो, सोया कि नहीं सोया. And what do you think he found? तो ओल्ड मैन ने क्या देखा वहाँ पे? On the banks beside the paddies, hundreds and thousands of little frogs lay motionless, their front legs pressed hard against their ears. तो जब वो जाता है वहाँ ओल्ड मैन क्या देखता है वहाँ पे कि hundreds and thousands of frogs, छोटे बड़े बहुत सारे frogs, lay motionless means उनमें कोई भी हिल नहीं रहा था, ऐसे जैसे बेहोश नहीं हो जाते सारे फ्रॉग्स. दे वर लाइंग देयर मोशनलेस एंड देयर फ्रंट लेग्स प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट देयर ईयर्स. मीन्स जो फ्रॉग्स थे वो अपनी फ्रंट लेग से अपने ईयर्स को ऐसे दबा के वहाँ पे बेहोश लेटे हुए थे. Finally Kantha opened his eyes and saw this. So we have completed up till here, last line. So from tomorrow we will start here. So I hope you are enjoying this story. So listen to this video and send me the homework immediately.